हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सबका यूपीएससी टाइम में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जो कि है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है, शायद एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ठीक है। व्हाट इज इन दिस इंट्रो ऑफ चैप्टर के इंट्रो में क्या है? अबाउट 200 ईयर एगो इंडियन सोसाइटी वाज नॉट एज इट इज नाउ। इंडिया की सोसाइटी जैसी है वैसी नहीं थी। इट हैज इम्पोज मैनी बैरियर ऑन दी वोमेन। वोमेन्स पे बहुत बैरियर थे। दे कुड नॉट गो टू स्कूल, नहीं जा सकती थी। दे कुड नॉट मैरी अकॉर्डिंग टू देयर विल इन मैनी स्टेट्स ऑफ countries. There are many part where the women's can't गो टू स्कूल। मतलब अभी भी ये सब रिचुअल्स हैं। इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री सती प्रथा एग्जिस्ट एंड विडोज वर द प्लेस इफ दे चूज टू डेथ बाय बर्निंग देमसेल्फ ऑन द फर्नल पायर ऑफ देयर हस्बैंड। द सोसाइटी दैट एग्जिस्ट इन दोज डेज was also caste based. People were dividing along line of caste. Brahman and Kshatriya considered themselves as a upper caste. Others such as trader and the money lender, often referred to as Vaishyas, were placed after them. Then come a peasant and the artisan, such as a weaver and the potter, referred to as the Shudras, working toward the change. Things have been greatly changed now. Women are enjoying better position in every field. One important reason for this was the development of new form of communication. From the early 19th century, debates and the discussion began to take place in order to root out the evils that had crippled society for the year. Raja Ram Mohan Roy Raja Ram Mohan Roy founded the Brahma Samaj in Kolkata. He wanted to separate Western education in the country. He strongly disapproved the system of the sati, changing the lives of widows. Sati Pratha was banned in 1829. Ishwar Chandra Vidyasagar favored widow remarriage. British officials support his cause and passed a law in 1856 that permit widow to remarry. Swami Dayanand Saraswati, founder of the Arya Samaj, also support widow remarriage. After a girl began going to school, reform felt that in order to improve the condition of the woman, it necessary to educate them, so several schools were opened for girls. People reacted sharply against girls to school, so they were taught at home. In aristocratic Muslim families in the North India, women learned to read the Quran in Arabic. Women write about the women. Muslim women like Begum of the Bhopal did a lot of promotion of the education among the women. They set up a primary school for the girl at the Aligarh. Begum Ruqayya Shekhawat Hussain also opened school for Muslim girls in a place like Patna and Kolkata. By the 1880s, India women began to enter the university. Some of them trained to the doctor, teachers, and many women began to write and publish their critical view on the place of women in not to be republished the society. Tarabai Shinde, a woman who educated at home at the Pune, published a book, Strip to Shulantla, criticizing the social difference between the men and women. Pandita Ramabai wrote a book about the pathogenic condition of the upper caste Hinduism and the sect. इट मीन्स क्या हुआ कि जो वुमेन्स की कंडीशन थी वो लोअर लेवल से अपर लेवल तक किस तरह से पहुंची. इन द हिस्ट्री सेक्शन वी विल डील अबाउट दिस चैप्टर. These are the main point of this chapter. When we will टीच दिस, मतलब जब हम इस चैप्टर को और भी डिटेल से पढ़ेंगे तो हर एक पॉइंट्स को हम आगे भी क्लियर कर सकते हैं. ये चैप्टर इतना सही था. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए. अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे. और चैप्टर से रिलेटेड और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.